समस्त छात्र एवं छात्री मान को स्वागत करुचे पिला माने हमर YouTube चैनल पे जिबा देरी न करके 2 मार्क्स क्वेश्चन वन शॉट वीडियो रे स्वागत पिले क्लास तो बहुत करन बट देहटा एते माने ठंडा जे मते जे कि पिला माने भल लागु सेति पय कि बाध्य हे कि क्लास बंद करे पड़छ कोन करिया बे क्लास आरंभ करले माने करबा ठंडा भी लागु जी सला सेति पय देहटा भी भल लागुनी बट एडजस्ट करबो को टिके छिंक फिंक आइला को कहछ देखो जिबा 2 मार्क्स रो गोटे महा मैराथन न तो वन शॉट वीडियो चेष्टा करबा सब 2 मार्किया प्रश्न ए गुटे वीडियो रे सारिया पाए ओके प्रश्न प्रथम प्रश्न डज द राइटर लाइक एग्जामिनेशन राइटर कोन परीक्षा को भल पाउतले कि क्योर द लाइन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर माने तमे निज सपोर्ट रे आंसर दियो द राइटर डज नॉट लाइक एग्जामिनेशन राइटर टोटल पिला माने परीक्षा को पसंद करू नथले ओके I quote the line this examination were great trial to me जो बही रे लिखा हिची ए परीक्षा गुडी को मो पे बहुत गोटे ट्रायल थिला इन सपोर्ट ऑफ माय आंसर हला राइटर जतले कहितले जे मते एग्जामिनेशन पसंद लागेनी एवं प्रत्येक एग्जामिनेशन गुडा मो पे कि गोटे ग्रेट ट्रायल थिले ओके नेक्स्ट देखिए पहले माने मेंशन द सब्जेक्ट दैट वी आर डियरेस्ट टू एग्जामिनर सब्जेक्ट आ भितरु मेंशन करो जो सब्जेक्ट गुडी को परीक्षकक माई अतिक प्रिय थिला पिला कोन द सब्जेक्ट दैट वी आर डियरेस्ट टू द एग्जामिनर लैटिन एंड मैथमेटिक्स एई सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ना लैटिन और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट गुडा एग्जामिनर को पाई कि अधिक प्रिय थिला पिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिला माने व्हिच सब्जेक्ट डिड द राइटर लाइक पिला माने व्हिच सब्जेक्ट डिड द लाइकर लाइक द मोस्ट राइटर को सब्जेक्ट गुडा को अधिक पसंद करथले द सब्जेक्ट द राइटर लाइक द मोस्ट वर हिस्ट्री पोएट्री एंड राइटिंग एसे हिस्ट्री को पसंद करथले पोएट्री को पसंद करथले आ राइटिंग एसे को व्हाट रीजन डज द राइटर गिव फॉर हिज नॉट डूइंग वेल इन द एग्जामिनेशन को कारण सकासे राइटर परीक्षा रे भलो करि पारु नथले द एग्जामिनर सेट क्वेश्चन ऑन ए लैटिन एंड मैथमेटिक्स एग्जामिनर माने जो क्वेश्चन को सेट करि था लैटिन और मैथमेटिक्स रो द सब्जेक्ट राइटर डिसलाइक मोस्ट और सेही सब्जेक्ट ओडा को राइटर पसंद करू नथले मोस्ट एंड सो द लेटर डिड नॉट सो द राइटर डिड नॉट डू वेल इन द एग्जामिनेशन एही कारण सकासे राइटर कोन करंती भलो एग्जाम करि पारु नथले जेहेतु तांकू एग्जामिनर माने जो सब्जेक्ट सेट करि था परीक्षा रे से सब्जेक्ट गुडा का राइटर को पसंद आसु नथला What did the writer write in the answer book for the Latin paper? Latin paper ro परीक्षा रे writer कोन आंसर लिखितले पिले माने the writer wrote his name writer प्रथमे ताको ना लिखितले the number of the question then the number of question लिखिले and put a bracket round तापर एक लिखि bracket देले and then answer book for the Latin paper एमते लिखितले गोटे निजो ना तापर एक नंबर देके bracket देले एति कि लिखितले ताका आंसर बुक next What was the sad spectacle for him? तो को जिनसोडा राइटर पई गुटे दुखदर समय थला the sad spectacle for him was the stain on the Latin paper that had been made by drops of his tear the Latin paper जेतेबेले राइटर बसितले परीक्षा दा पई ताको कोनोसी प्रश्न उत्तर आसनथि किंतु सेठी बसि की ताका आखिर जो लुह बहुथला एवं सेही परीक्षा खाता आंसर बुक दा दाग हो जायतला सेही गुडा थला ताको पई की बहुत sad spectacle पिले What is the writer position in the merit list admission? Writer को admission में merit list केते position होतला? The writer position was the lowest in the merit list. मतलब lowest सब तोड़े थला पहले. Next question. Who does give the credit of his in the entrance examination? तो writer को जो सफलता आइतला Harrow विद्यालय entrance examination में से कहा को credit देते? He gives Dr. Weldon the credit for his success in the entrance examination. से तंकर एंट्रेंस एग्जामिनेशन सफलतार क्रेडिट संपूर्ण भाव देथिले डॉक्टर वेल्डन को द राइटर गेव द क्रेडिट टू हिम as he was able to judge his hidden talent and declare him worthy to pass into Harrow काहे के तांको राइटर क्रेडिट देथिले काहे कि ना राइटर का पाखरे लुचि रहितवा ज्ञान को डॉक्टर वेल्डन जानि परिथिले सेति पई से तांको पास करे देथिले किछि न लिखि मध्य सेति पई राइटर डॉक्टर वेल्डन को टोटल सब जगह क्रेडिट देथिले नेक्स्ट क्वेश्चन
How did he became the last boy in the class? Writer केमिति शेष पिला थिले क्लास रे. As two students below his name in the school list रो सभा दुई जण थिले जो तळकू disappear due to illness. से माने आसु नथिले काहे ना ताका देह खराब थिला, some other reason आ किछि कारण सकास. He became the last boy in the class. Writer last आडू दुई जण को ऊपर थिले. जो राइटर को तळे जो दुई जण थिले सेमान का देह खराब किबा अन्य कोनोसी कारण सकास आसि नथिले. सेति भाई राइटर थिले लास्ट ये थिले. What is the custom of calling the roll of Harrow? Harrow विद्यालय custom calling कौन थिला? That the custom of calling the roll at Harrow is that the student walk past teacher in a line and respond one by when their names are called. माने राइटर कौन कहू एति जो custom of calling Harrow विद्यालय कौन थिला? माने समस्त लाइन करी छुडा होतले टीचर जहा ना डाकतला पास करिके टीचर को जाउतले. आ एटन विद्यालय custom of calling कौन थिला? The custom of calling the roll at Eton is that the student stand in a group and lift their hats in the response to their names. एटन विद्यालय रे सब पिला माने एकत्रित होई छिडा होतले आ जते बळे सेमान को ना डका होतला सेमान ताको टोपीटा को उठौतले. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया पले. Why he is last of all? Why did people say? काहे की से सभा शेषरे लोक माने काहे की कहउतले. The people said so because लोक माने कहउतले कि चर्चिल को काहे की लास्ट रे कारण the people wanted to know लोक माने जाउतले जानिया पई कि चाउतले the writer was the last of all marched by. तो राइटर काहे की सबा लास्ट रे छिले. फरीज काहे कि ना तांका बापा जणे थिले लॉर्ड रैंडल्फ चर्चिल जे कि आगधाडर नेता आ हाउस ऑफ कॉमन वर्तमान से रिजाइन देथिले. तो जणे आगधाडर नेतार पो केमिति से सबा लास्ट रही परिबो सेति पे लोक माने जानिबा को चाहतले. नेक्स्ट देखिबा. What kind of students were taught Latin and Greek? को भलिया पिला लाटिन और ग्रीक पढुतले ना. द क्लेवर स्टूडेंट्स जो माने चतुर पिला सही माने लाटिन और ग्रीक पढुतले. Which student were taught only English? को पिला माने केवल इंग्लिश पढुतले ना. those who are slow learners माने जो माने टिके गधिया जो माने टिके डॉन्सेस स्टूडेंट्स माने टिके स्लो लर्नर से माने पढुतले इंग्लिश पिला माने. How does the writer rate English as a subject and Mr. Somerville as a teacher? तो राइटर केमिति कहितले इंग्रजी को भलिया ओटे विषय एवं मिस्टर समरवेल को भलिया ओटे टीचर बेले के. Now the writer read English as a noble subject. Writer read करतले जे इंग्लिश होउची गोटे नोबेल सब्जेक्ट and Mr. Somerville as a brilliant. Mr. Somerville जने brilliant and innovative teacher of English. Mr. Somerville होउची गोटे brilliant teacher जे कि इंग्लिश रे विभिन्न जिंस को उद्भावन करथले. नेक्स्ट कोट देखिया क्वेश्चन. What part of English grammar did he learn from the Mr. Somerville? को इंग्लिश रो को पार्ट को राइटर मिस्टर समरवेल को तो पढितले. He learned English parsing and analyzing. माने से जानिथिले गोटे ब्रिटिश वाक्य को केमति खंड खंड करा जीवो हला मिस्टर समरवेल कतलो. He was learned how divided a long sentence जमति कहले गोटे बडो सेंटेंस को केमति डिवाइडेड करा जीवो into part and know the grammar each word. सब ग्रामर रो पार्ट को केमति जणा जीवो. ओके नेक्स्ट देखिए पिला माने दीटा क्वेश्चन दरकार ने हला. How did the boys enjoy टाइम द स्विमिंग बाथ. जो हारो विद्यालय रे गोटे बडो स्विमिंग बाथ थला तो से माने सेठी केमिति एन्जॉय करथले पिले माने. the boy enjoyed their time in the fun and frolics. The swimming bath को सब मजा कौतुले करथले से स्विमिंग बाथ करथले. ओके they used to go there in a large number. समस्त सेठी बहुत लोक पिला माने जाउतले आ सेठी विभिन्न प्रकार ईटिंग डिप्स ईटिंग बॉन्स माने सब हॉट एस्पलेट माने विभिन्न कुरकुरे टाइप रा बहुत नॉली टाइप रा जिंस खाउतले. What kind of pranks did enjoy at the bath? को प्रकार रो गोटे मजा कौतुल खेलतले गाधेला वाले से माने. The pranks they enjoy at the bath were that by coming up behind some neck friend or even for and pushed him. माने सेठी जे छिडा होतला सही बाथ पाकरे स्विमिंग बाथ पाकरे पछुरु पछुरु लुचि कासी ताको लंगवळा करी से पवित्र को पेले दबाडा होतला गोटे मजा दिन सुपले. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ अ बॉय. से बॉय रो रिएक्शन कोन थिला पिले माने. द बॉय रिएक्शन वाज ऑन अ फुरी. से पिलाटी पूरा रागी के जर्जरित थिला. ही केम आउट ऑफ द पॉन्ड. से पूरा पोखरे उठिला फ्यूरियस मोड पूरा रागी की पूरा जर्जरित मोड रे. आ कोन कला ना राइटर हु वाज फ्लिटिंग एट द मोमेंट एंड थ्रू हिम इनटू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द पूल. आ राइटर को धरि की से जो कोन करथले पिला ने टोटल जो गभीर पोल भीतर को से जो स्विमिंग बाथ रो गभीर जगह को कुबाड़ देथिले. देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने जोडा इंपोर्टेंट आसियार अछि सेउडा पढेबा हला नले पढेबा नै. आ पिले ए दिटा क्वेश्चन देखिबो कि नेटे देखा जाउनी तथा भी देई दोछि. हाउ डिड ही विन द प्राइज. राइटर केमिति गोटे प्राइज विन करथिले पिले हला. He gained the prize at school for reciting headmaster 1200 lines of Machiavelli. माने
जो राइटर केमिति प्राइज पाइतले ना 1200 शब्दर जो मार्कवालंकर गोटे अछि रिसाइटिंग प्रेयर अछि रिसाइटिंग गोटे पोएम अछि ताकू से मन रखी लेज एन एंशिएंट रोम रो ताकू जेतेबेले से कहितले एनी सिंगल मिस्टेक कोनसी भूल न करी कि सेति भाई से प्रोज पाइतले जो सब प्राइज पाइतले नेक्स्ट आउ किस दरकार नहीं प्ले हां एटा अछि क्वेश्चन छाड़ दे एटा अछि हाउ डिड द राइटर प्रिपेयर हिमसेल्फ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर द आर्मी द राइटर आर्मी रो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पे केमिति प्रिपेयर करथले ना द राइटर प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर आर्मी राइटर निजको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पाई कि आर्मी पाई प्रिपेयर करथले बाय फोकसिंग ऑन ज्योग्राफी राइटर को करथले फोकसिंग करथले ज्योग्राफी पे और न्यूजीलैंड ऊपर द नाइट ऑन द इवेंट ऑफ हिज एग्जामिनेशन माने परीक्षार पूर्व दिन he had written the name of all maps और राइटर को करथले सब देशर मैप गुडा लिखितले इन एटलास एटलास जानते हो मैप जोड़ थाए माने ता भीतर बाचितले न्यूजीलैंड रो भाग्यवश तो परीक्षा से न्यूजीलैंड रो पळे आसला कोन ना प्रश्नटी हला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया पिला माने द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी रो why was it hard for the author to believe that his grandmother was once young and pretty काहे कि राइटर के पे बहुत कष्टिनो साध्य होतला जे कि तांको जेजेमा जने कोन पिले माने ना जने खूब सुंदरी थिले एवं युवती थिले इट वाज हार्ड फॉर द ऑथर ये बहुत कष्टदायक होतला टू बिलीव दैट इज ग्रैंडमदर से जे कि तांको जेजेमा को विश्वास करिया पे कोन वाज ए वंस यंग एंड प्रिटी से जने युवती सुंदरी थिले कारण ही इन स्पाइट ऑफ सेइंग हम सब कहउतले जे मो लास्ट 20 इयर लानी तांको देखुची के ना राइटर कहउतले जे मो लास्ट 20 वर्ष हो गलानी मो जेजेमा को देखि आउची did not find any change मु तांका ते कोनोसी परिवर्तन देखिया पाउनी इन हर ब्यूटी तांका जो ऊपर बट शी वाज आज एलिगेंट आज एवर सी जेमति थिले आगुरु एबे से केमिति जुबती थिले ए कथाडा हाउ डिड द ग्रैंडफादर अपीयर इन हिज पोर्ट्रेट राइटर को जेजेबान को फोटो चित्र केमिति थिला ना हिज ग्रैंडफादर अपीयर एटलीस्ट to be 100 years old person in his portrait माने राइटर को जेजेबापा फोटो चित्र देखा जाउतले जेंति अतिका 100 वर्ष रो अधिक बुढ़ा पड़ी what sort of a person did he look in his portrait तो राइटर का जेजेबापा फोटो रे कोभଳି लेखा देखा जाउतले ना he looked in his portrait से तंको फोटो चित्र रे देखा जाउतले as sort of a person who could not have a wife जे फोटो रे देखा जाउतले तंको जमार स्त्री नथिबो आ पिला नथिबो बट कोन थिबो he but could only have many grandchildren जोडा कि तांकर अनेक नाती और नाती थिबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा why does he say the thought was almost revolting काहे कि राइटर कहितले जिंस मो विश्वास करूनी ना he said that the thought was almost revolting से कथाडा काउतले काहे कि because it was quite difficult ये बहुत कष्ट सा देखला on his part to believe that his grandmother was once pretty and young काइना ताका जेजेमा एकदा सुंदरी युवती थिले एकता को राइटर टोटली विश्वास करि पारु नथिले नेक्स्ट देखिया कोन इंपोर्टेंट क्वेश्चन खाली इंपोर्टेंट पढा वाला व्हाट इज द ग्रैंडमदर रूटीन इन द विलेज राइटर को जेजेमा को रूटीन को थला विलेज रे पिला माने द ग्रैंडमदर रूटीन इन द विलेज कंपेयर्स वॉकिंग द राइटर ऑफ इन द मॉर्निंग द राइटर को जेजेमा कोन करथले सकाळ उठुतले राइटर को उठै दउतले आ प्रिपेयरिंग फ्रॉम द स्कूल आ स्कूल जाबे प्रिपेयर करथले she also went to school और राइटर को सहित तक जेजेबा स्कूल को जाउतले आ दुई जण मध्ये फेरुतले पिला स्कूल नेक्स्ट देखिबा व्हाट लेसन डिड द राइटर लर्न फ्रॉम द विलेज प्रीस्ट को लेसन ता विलेज प्रीस्ट को कतुरु राइटर पढुतले पिला माने द मॉर्निंग प्रेयर एंड अल्फाबेट मन थियरी था हाउ डिड द ग्रैंडमदर स्पेंड हर टाइम एट द टेंपल तो राइटर को जेजेमा केमिति तंक निज सब समय गुडा को मंदिर रे बिताउतले द रीडिंग बाय होली बुक्स एंड स्क्रिप्चर तो राइटर को जेजेमा होली बुक्स और स्क्रिप्चर गुडा पढी कि तक समय को अतिबाहित करथले व्हाई सी द रिलीजियस पर्सन हाउ से केमिति जने धर्मीय प्रणयन नारी थिले केमन किपरि यस सी वाज अ रिलीजियस लेडी हां से जने धर्मीय प्रणयन नारी अटंती हर मॉर्निंग प्रेयर सकाळ उठी मॉर्निंग प्रेयर करथले फ्रीक्वेंट विजिट टू द टेंपल सब दिन सकाळ जाउतले मंदिर को रीडिंग होली बुक्स और से मंदिर रे बसे कि पुराण शास्त्र पढुतले थ्रोइंग चपाती टू द विलेज डॉग्स आ कुकुरा मानु खाया को दउतले हु फॉलोड देम टू देयर होम जस्टिफाई दिस फैक्ट एई दिन सरो हमें जानि पड़ते राइटर का जेजेमा जणे रिलीजियस पर्सन थे नेक्स्ट देखिबा why could not the grandmother help the writer with his lesson at the city काहे कि राइटर को जेजेमा शहर स्कूल लो लेसन रे राइटर को हेल्प करि परले ना द ग्रैंडमदर कुड नॉट हेल्प द राइटर विथ हिज लेसन तो राइटर को जेजेमा तंको कोनोसी प्रकार काम रे सहायता करनथला बा होमवर्क रे शहर स्कूल लो होमवर्क रे काहे कि ना बिकॉज़ शी डिड नॉट नो द सब्जेक्ट सच एज इंग्लिश तो सी
राइटर को जेजेमा एई बल सब्जेक्ट गुडा जानि नथले जे इंग्लिश वेस्टर्न साइंस द लॉ ऑफ ग्रेविटी ये सब जिंस गुडा को राइटर का जेजेमा जेहेतु जानि नथले से जेहेतु पढि नथले सेति में राइटर को इंग्लिश स्कूल होमवर्क रे कोन से सहायता करू नथले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पहले कोन अछि देखो व्हाई डिड द लेसन एट द इंग्लिश स्कूल डिस्ट्रेस द ग्रैंडमदर इंग्लिश स्कूल जो पाठ पढ़ा जाउतला राइटर का जेजेमा जानि कि काई से विरक्ति हेतले ना द लेसन एट द इंग्लिश स्कूल डिस्ट्रेस जो लेसन ना पढुतले राइटर जो इंग्लिश स्कूल राइटर का जेजेमा विरक्ति हेतले काहे कि बिकॉज़ स्कूल डिड नॉट टीच अबाउट गॉड एंड होली बुक्स काहे कि तो से स्कूल ले भगवान को ऊपर पुराण शास्त्र ऊपर जेहेतु पढ़ा जाउ नतला से काहे कि हला म्यूजिक लेसन सुनि कि व्हाई वाज द डिस्टर्ब अबाउट हिज म्यूजिक लेसन काहे ना जेहेतु से म्यूजिक लेसन टा के माने भद्र लोक माने पइलवे म्यूजिक लेसन भद्र लोक पइलवे सेति पइ से सुनि कि डिस्टर्ब होइतला लास्ट क्वेश्चन देखो What are the three way which the grandmother spend her day? এটা দরকার নাই. What is the happiest time for the day? মানে grandmother को पाई कि total दिन रा कोड happiest time थला. The happiest time of the day. Total दिन मान को happiest time थला. For he was to be in the mindset chirping sparrow. से कोन करथले घर चोटिया मान को जो खाया करथले फीडिंग. सेही गोटे थला ताको माने कोन टोटल दिन मान को happiest आ किछि किछि घर चोटिया आसे कि ताको कांधरे शोल्डर रे किछि लोग ताको गोड़ रे आसे बसुथले हला. नेक्स्ट देखिबा. How did she receive him when come back home for abode? The writer बाहरु पढ़ी के आसीथिले तो राइटर का जेजमा केमिति ताको रिसीव करथिले when he come back home राइटर कहथन जतल मो फेरी के आसीथिले मो घर को माने विदेश यात्रा करी की बा पाठ पढ़ी की she embarrassed him in her arms से मतलब मो ताको कुंढी के धरले she was speechless and saying her prayer आउ से ताको प्रार्थना भी सेतल करथिले नेक्स्ट देखिबा एटा देखो हाउ डिड सी पास वे राइटर का जेजेमा केमती मरले सी पास्ड अवे पीसफुली राइटर का जेजेमा पूरा शांत रे हमरे मरि गले व्हाइल सी वाज लेइंग इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिट्स राइटर का जेजेमा शांत रे चली गले एवं से जेतले माने बेड रे खट पर सोइतले एवं तंगर प्रार्थना करूथले सेति के समय से मरि गले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपले माने कोन अछि नेक्स्ट टॉपिक रो देखो एडी अछि What is the key problem affecting India progress lack of policy or lack of implementation भारत रो मुख्य प्रॉब्लम डा कोन काली एडा पढितला साइंस पिला बहुत पिला मते कहले जे कि क्रैब मेंटालिटी हबो सर क्रैब मेंटालिटी हबो ओ भाई क्रैब मेंटालिटी कोन पे हबो साइंस पिला गोटे क्वेश्चन पढितला व्हाट इज द की प्रॉब्लम अफेक्टिंग इंडियन प्रोग्रेस तो ऑब्वियसली क्रैब मेंटालिटी हबो ना इंप्लीमेंटेशन हबो ना नहीं इट देन द की प्रॉब्लम अफेक्टिंग इंडिया प्रोग्रेस लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन हम पाकर इंप्लीमेंटेशन नहीं टीम वर्क नहीं बोले होछ ना सेडी ऑप्शन देथिला इंप्लीमेंटेशन क्रैब मेंटालिटी ए आउट दिरा ऑप्शन थिला किंतु किछि पिला मते कमेंट कले कोन भूलभाल कहउछ सेडा इंप्लीमेंटेशन हबो सेडा क्रैब मेंटालिटी बा किछि कहिनि बट क्रैब मेंटालिटी अलगा भारतटा कोन भंकड़ा मानसिकता पई आगु जाउ ना हम पाकर न्याय अछि हम पाकर पॉलिसी अछि अपन सब अछि किंतु हम पाकर इंप्लीमेंटेशन नै ओके एगुडा Next, what is the joke about the Indian and Japanese worker in Maruti Suzuki company? जेतबेले Maruti Suzuki company आसीतला हला बुझला तो से जोक टा कोन आसीतला ना द जोक अबाउट द इंडियन एंड जापानीज वर्कर जो इन भारतीय और जापानी मानक भीतर जो वर्कर भीतर गोटे जोक आसीतला जेतबेले Maruti Suzuki company आसीतला जो इंडिया को कहितला ना इंडियंस 1 इंडियन इक्वल टू 10 जापानी माने जणिया भारतीय 10 जण जापानी संगरे समान पिला हला बुझला Reality in spite of being smart, capable, commitment, individual. 10 Indians are equal to Japanese because lack of spirit. किंतु भारत 10 जण जापानी सहित गोटे भारत समान काहे कि भारत एकुटिया ही सब किछि करि पारे किंतु जतबेले हमें 10 15 जण भारतीय ही अछि तो जण जापानी सहित समान नै हैला काहे हम पाखे टीम वर्क नै तो व्हाट इज क्रैब मेंटालिटी काहे ताकर पडितला तो न आसी पारे हैला बुझला तो एटा क्वेश्चन देखो पले देखि देइतो फिर व्हाट इज क्रैब मेंटालिटी बट न आसला मते लागुनी How can the right kind team be created? हमें किपरि गोटे भलो टीम क्रिएट करि परिबा the right kind of team can be created understanding how best utilize the varied experience of obtain good result माने हमें भलो टीम सेतले गठन करि परिबा जेतले टीम रो सब पिला माने थिबे सेमानंकर सबु और विविधता को हम जेतले यूज करि पारे एक्सपीरियंस ततले हमें भलो टीम टा गठन करि परिबा if this were happening in India जदि एटा रहितंता what does the author mean by this एकता कहबार ऑथर माने कोन पिला माने कौन एकला देखिबा by this the author means India took a leap out of American books in the former seminar employees are averse to making copy taking notes but the later
is a study in a contrast. There is no room for hierarchy in the American man. से कहया कथा जे आमे जतले गोटे कंपनी थिलु बहुत सीओ जाइतले सेठी किए माने कोन चा कलान त किए डिस्क क्लीन कलानी सेठी किछि गर्व अहंकार नथला किंती गला एठी किंतु भारत रे भଳି हबनी केना भारत रे गर्व अहंकार लोककर अछि नेक्स्ट देखिबा who is a good team player who is a good team player a good team player is he who has respect for other जे अन्मान मान को सम्मान दिए टॉलरेंस माने सहनशीलता रहइबो डाइवर्स स्टैंड अप पॉइंट ऑफ व्यू willingness एटा देखिबा नेक्स्ट देखिबा what are the quality of a good team player but a good team player quality कौन the quality of a good team player are ability to research ता दक्षता रहया दरकार माने डिफरेंस वे को विदाउट आइदर वैलिटी माने विभिन्न झगड़ा मगड़ा इत्यादि समाधान करिया दरकार होला what does the author mean by hidden agenda राइटर को मत hidden agenda कहले कोन ओटे बुझो how does it affect teamwork ये किपरि टीमवर्क को अफेक्ट करि थाए by hidden agenda the author means hidden agenda कहले को author को माने रे the people habit is duplicity लोक माने को दैत्य माने छ धराई in other words say something गोटे कथा तुमको से गोटे कथा कहबे and another out there meaning to out दा ताको एडी राइटर कोदी स्लाइट लेवल ऑफ कॉन्शियस माने साप माने को ऊपर जेंति कोदी हां माने स्नेक ऊपर सेटा कहचंदी तम अगर गोटे कथा कहउथिबे तो पछोटा आउटा कथा कहउथिबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया does criticizing India man এটা দরকার নেই আমি দেখছি देखिए what are the key element of team success गोटे मुख्य उपादान को दो टीम रा सफलता पाई की the key element of team success stability स्थिरता स्थायी कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास सिक्योरिटी निरापत्ता कंफर्ट इट्स मेंबर एटा होची टीम कोन की एलिमेंट what affect team performance in India भारत रे काहे टीम परफॉर्मेंस पर कोन अफेक्ट करे ना देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल वर्क और मेंटल वर्क हम भारत रे शारीरिक काम करथि लोक और मेंटली काम करथि लोक मध्ये आकाश पाताल फरक अछि हला what is the job of the author's driver author को ड्राइवर को जॉब कोन and the job of the author driver was open to door for him at the time of entering and coming out of the car तो राइटर को जॉब को ऑथर होची ड्राइवर को जत राइटर आसीबे कार ओपन करिया तो राइटर ओलेबे कार को ये करबा कोन छी ओके how did the author motivate the driver to be a good team player तो ऑथर केमिति मोटिवेट करथिले ओटे ड्राइवर को ताको निज ड्राइवर को ओटे गुड टीम प्लेयर आपे in order to be a team player the author wanted the driver to take part in the office work तो राइटर ताको मोटिवेट करे पे कहितले जे सी ताको ऑफिस वर्क काम रे सहाय्य करिवो केमति ना मेकिंग कॉपी करिवो फिलिंग पेपर करिवो सेंडिंग फैक्स करिवो रेस्पोंडिंग फोन कॉल्स सिंपली रीडिंग ए सब गुडा काम करियो सेते में से ताको कहितले तेगर टीम वर्क हला तो ऑलरेडी पिला माने नो सबु सारी देली आ किछ दरकार नै एडी होची आ गोटे टीम व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू बिल्ड टीम इन इंडिया काहे कि भारत रे गोटे टीम गठन करे बहुत कष्ट साध्य इट इज डिफिकल्ट टू बिल्ड टीम इन इंडिया बिकम नोबडी इंस्टेड टू बी ए सबऑर्डिनेट समवन माने केही चाहते नि जे मु सेकंड फेज रे काम करी भारत लोक माने समस्त जानि मु मालिक के भी मूल लीडर भी केही ताका पछपट रही काम करे चाहते नै तो सॉरी गला टोटल प्रोज विषय टोटल दिमारिया कंप्लीट मु ऑलरेडी काली तुमको पोलियो माइलेट्रिस पढी देथले एही टाइम रे तुम देखि चैनल अछि आ टोटल प्रोज रो दिमारिया कंप्लीट आज तो मॉर्निंग अवेयरनेस दिमारिया देई देबी मु तुमको टेलीविजन पढी देथले आ बालाडा फादर के लेकर अस्लाम अपला ए दीटा दिमारिया रहइला मु तुमको आज साथ देबी ओके टोटल प्रोज विषय रो गोटे वीडियो दिमारिया सॉरी गला